are of importance. From my perspective, I am your family. You are my family. I don't see you, और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम परिवार हैं, और मैं सिर्फ आपके नहीं, यहां 500-600 लोग हैं, मगर मैं हर कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं. ये एक परिवार है, और मैं आपके परिवार का हूं. मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है. जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं. ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है. मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरे प्यारे देश में, हमारे प्यारे देश में इतनी नफरत, इतना क्रोध और हिंसा फैल सकती है. मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं. हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं. आरएसएस, बीजेपी का संगठन, आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस. ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं. हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं. राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है. हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं. हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं. सच्चाई है. मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि ये देश जो है ये सच्चाई को मानता है. ये देश जो है ये सच्चाई का देश है, और इस देश को बात समझ आ रही है. ये देश देख रहा है देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं, और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं. मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है. मुझे कोई डर नहीं है. मैं बिना डरे मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है, और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं. मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं. तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से, यह लड़ाई हम सबकी लड़ाई है. इस लड़ाई में हम सब शामिल हैं. मैं आपके साथ शामिल हूं. हमारे सब सीनियर नेता हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं. हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हराकर दिखाएंगे.
कभी कभी हमारे जो सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नॉर्मल बात है, क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आपने देखा एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अलग अप्रोच है उनकी। हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एक अप्रोच है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है और ये राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है। ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। और आपको दिखेगा, अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैंने कोविड की बात की थी, याद रखो, मैं बता रहा हूं, जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना ही हमारे स्टेट्स के बीच में, धर्मों के बीच में, जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, दबाएंगे, उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। मैं साफ बोल देता हूं। और कांग्रेस पार्टी का काम उस बातचीत को, उस कॉन्वर्सेशन को फिर से शुरू करने का है। कांग्रेस पार्टी का काम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, उनकी रक्षा करने का है। ये हमारा काम है, ये कोई रीजनल पार्टी नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी, आरएसएस नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी ही करेगी। हमने कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुपा छुपा कर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं डाला। आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं, हर जगह ये अपने लोग डाल रहे हैं। और इससे जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है लोगों के बीच में, वो खत्म होती है। एक तरफ बेरोजगारी, युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर आग लगेगी। और हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है, और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है। इस देश में कोई ऐसी जात, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने
अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए, कोई है ही नहीं इस देश में। रीजनल पार्टीज, कोई किसी जात की है, वो सब की नहीं है। यही एक पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है। तो मैं आपको यह कहना चाहता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। All of you came here and showed us the way forward. You gave us a direction. Leaders, senior leaders showed us, told us where we should go. And I think there is a lot of clarity in terms of where the Congress party has to go in terms of policy, in terms of thinking, what our positions should be, what our political positions should be. I think there is tremendous clarity that has come out of this discussion. In fact, you yourselves have told me that there is a lot of clarity that has come out of this discussion. I think that these discussions are very useful. And I think we should have these discussions much more often, much more systematically. It allows the Congress party to come together. It allows us to feel like a family. It allows us to talk to each other. And I think it helps us move forward with a strong and dynamic way. So I'd like to thank all of you for coming here today. Namaskar. Jai Hind. Opportunity to express your views and offer suggestions in a spirit of constructive participation. I, of course, had received some summary of discussion in each of the 6 groups, and these will inform our party's position, policies and programs. They will also be of value to prepare our manifestos for state and national election. I want to make a special mention of the report of the organizational group, since it is the most immediately relevant. Some of these ideas and ideas from other groups have formed part of the Udaipur Nav Sankalp Declaration that has just been adopted. I assure you that the detailed recommendation of the group, some of them are not in the Sankalp, will be acted upon expeditiously. We will undoubtedly leave re-energized with the refreshed spirit of collective purpose. Before we do that, let me make the following 4 specific announcements in addition to the Nav Sankalp that has just been adopted. So we will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it.
we'll have to find ways to accommodate seniors like me in this, on how to easily participate in the yatra without having to run out of breath and God knows what else. The yatra is to strengthen the bonds of social harmony that under severe stress and to preserve the foundational values of our Constitution that are under assault, and also to highlight the day-to-day concerns of crores of our people, as Rahul Ji has mentioned in his speech. Meanwhile, phase 2 of the district-level Jan Jagran Abhiyan that had been launched earlier will resume a month later on the 15th of June. Very hot time, but it will. The extensive campaign will highlight economic issues, especially the growing unemployment and intolerable price rise that is destroying livelihood. A compact task force will be set up to drive the process of internal reforms that are essential and that have been discussed in different groups here at Udaipur. These reforms will focus on the 2024 Lok Sabha polls, will cover all aspects of the organization, including structure, rules for appointments to party posts, communications and publicity, outreach, finances, and election management. The composition of the task force will be notified in the next 2-3 days. I have also decided to have an advisory group drawn from the CWC that would meet regularly under my chairpersonship to discuss and deliberate upon political issues and challenges before our party. Of course, we do have the CWC that meets from time to time, and that will continue. Hopefully, a little more often than it does normally. Now, the new group is not, however, a collective decision-making body, but will help me get the benefit of the vast experience of senior colleagues. It too will be notified very soon. Throughout these 3 days, you have also had the opportunity to get to know each other, to meet and interact with each other. And as for myself and many others, I had the opportunity, I was able to sit through all 6 groups and listen to some of the speakers. Now, I want to end with a personal note, and that is last night I came away from the dinner so graciously hosted by Ashok Gehlot-ji, feeling that I had spent the evening with my family. And my larger family. And I was very touched when some of younger colleagues, guests and colleagues, shared the same view. And so I very much hope that this is the spirit in which we will disperse from this Chintan Shivir. So, my friends and colleagues, let me wish you all the very best. We will overcome. We will overcome. We will overcome. That
That is our determination. That is our Nav Sankalp. Thank you. Jai Hind. साथियों, इससे पहले कि रघुवीर मीना जी Now conversation. This party's DNA is a conversation between the people of this country. Doesn't matter where they come from, doesn't matter whether they're rich, poor, what community they're from, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, anybody. This party has always provided a platform for a conversation, a platform where people can speak without fear, without worry. And that is what this party continues to do. Unfortunately, this is not how the politics of the country is progressing. The politics of the country now does not entail a conversation. It does not entail the expression of views. It does not entail the expression of feelings. Some days back, in Parliament, I made a speech where I said, India, Bharat, is a union of states. That is the line that is written in our constitution. India is not described as a nation. It is described as a union of states. Meaning, the states of India, the people of India, have come together to form the union. They have come together to form the union. And it is critical for the union of this country that the states and the people are allowed to have a conversation. Because the only alternative, and I say this with full responsibility, the only alternative to a conversation between the people of India is violence between the people of India. You can either choose to have a conversation between the people of India, or then you can choose to have violence between the people of India. And this conversation that takes place between the people of India, between the states of India, the instruments of this conversation, the mechanism of this conversation are the institutions that the Congress party, that your great leaders, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Patel, Azad ji, Ambedkar ji, have helped us create. These institutions do not belong to any one individual. They do not belong to a political party. They belong to the union of India. They belong to every single person in this union. And today what we are seeing is the systematic destruction of the institutions that help India, help the states of India speak to each other. We see it, those of us who are in Parliament, we see it in Parliament House. Our mics are shut off, members are thrown out of the House, conversations are not allowed. We see it when the judiciary is pressurized. We see it when the arms of the election commission are twisted. We see it when the media is muzzled. And we say, okay, we lightly say
that the conversation is being muzzled. But what we do not understand is the consequence of this muzzling. India does not understand it yet. Most people in this country do not understand it. Because the day this country's institutions stop working, the day this country stops speaking to itself, the day this country does not communicate with itself effectively, is the day that we will all be in very serious trouble. And you can already see the tension. It is there for everybody to see. You speak to the press people, they will tell you that we are muzzled. You speak to the political class, speak to the leaders, every single politician knows the word Pegasus. There is not a single politician in this country who does not know what Pegasus is. Pegasus is not a software. Pegasus is the method of silencing the political class of this country. It is not simply a software. It is the way to strangle. It is the way to strangle the political discussion in this country. And so this is what we are seeing. Now the question is, how does the Congress party respond to this? It's a question on all your minds. We see economic collapse. Some days back, the Prime Minister said, we are going to be exporting wheat. And then suddenly, a few days later, we are not going to be exporting wheat. We put a ban on the export of wheat. My friends from Punjab and the rest of the country know the impact of the farm laws. You know what the farm laws were designed